written means 2025 myself यूपीएससी for 2 years. टॉपर का So I इंटरव्यू। got to know about my weaknesses and strengths, and I worked upon them both ways. And so I feel that in my third attempt, and I was also fortunate since I joined the services, Yes. and I was with a bunch of people who were all aspirants who had succeeded the UPSC exam. So Yes. they also gave my batchmates. They gave great inputs for different stages. So I'm thankful to them also, Great. and it was all a process. Acha, Anuj, let's look at this GS papers, Right, which is one of the determining papers nowadays for the interview con. They generally say that this paper is more important, that paper is more important, this is lesser important. Do you feel anything like that, that any paper is lesser important than any other paper? Sir, I have never ever thought in Yes. that terms, but I think that some of the papers out of the GS papers, or rather we should say the mains as a whole, one should prioritize definitely the optional, because it is something that would fetch you out of 500 marks. So it is a lot at the risk, and then definitely. Since the differentiator becomes the essay as well as the ethics paper, because if we look at the range in GS1 to GS3, it isn't much. So if one has to secure good rank, so one does have to work a lot on essay as well as ethics and optional too. Okay. And Anuj, just to look at this essay paper and all, Right. do you think essay is a paper which actually is a reflection Sir. of what you know entirely probably in your GS subjects and the optional and little bit of extracurricular reading, you can say? Right. Sir, I have truly believed in that only, sir. It wasn't any preparation of that sort, like in a very strict manner of essay as we prepare for GS. Right. It was something that came very organic. Yes. It was completely based on the life experience, something which one is shaped by the values, the philosophy, and the things that we look around us also. Right. So it is largely a result of that only, sir. Okay. And how has been your score in essay? They have been fluctuating like others, or has Right. it been consistent? Sir, in my first attempt, I got 111. Sir, in my second attempt, I got 98. Okay. And I believe that in my third attempt, since I have got first rank, so I believe that it Must be towards it the must north. be. Surely. No, definitely it would be north, because essay plays a very, very important role, isn't it? Acha, Anuj, as we say that this exam preparation is also comprehensive. Right. ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करते हैं, Sir. मेंस की तैयारी अलग से करते हैं. तो did you also took a approach like that कि एक ओवरऑल तैयारी की जाए? उसके Sir, बाद truly, sir, I have always seen the entire exam in holistic manner, and have prepared comprehensively. Be it mains or be it pre, the subject matter is the same. And although there are certain techniques or certain strategies that one has to plan for according to the exam, because the prelims is a different set of examination and there is subjectivity involved in means. Right. So one has to prepare the answer writing, and those aspects are definitely there. But as far as the content and subject matter is concerned, it is my personal opinion that it has to be prepared comprehensive. absolutely, because I think another point of understanding UP's essay is that things are connected. It is not in silos that you are understanding only polity and you're not able to understand ethics probably. Right, sir. So they are connected, right? Definitely, sir. And in fact, it is very like it does give dividend to prepare ethics in a manner in which we can involve inputs from other GS papers also. Right. That interconnection of subjects is Very. very, very important. Definitely, sir. Okay, tell me something. Is there a change in mentality also as you mature in the exam? I mean, the way you look at the first attempt Right. and the way you look at the third attempt. Sir. Many things changes, isn't Right, it? Sir, as I have also contemplated that entire UPSC journey is a very humbling experience, because if I now look in the hindsight, the mindset which I started was ki I have to crack IS only, and other services don't matter. Yes. But eventually, when you go through the process and when you go through that grueling journey, yes. you start believing that okay, other services are also great, and it would be very grateful of the God if I am allocated any of the services. That's Then very it is true. an humbling experience, sir. It is. Well, it makes you realize the reality also. Right, sir. It is not that you should always be at the top. Right. However, going through your DAF, because you were in the IGP, I read at that Right, point sir. of time. Because you came online, I think, in Right, the right, IGP. sir. Right. I could not meet you there. But however, I saw your DAF. And Right, I sir. see that in the section of achievement, you have been one who has been always at the very top. Fortunately, yes. Fortunately, yes, but you have been with your hard work. Right. So we see that you are always been top. मतलब हमेशा से ऊपर. Sir. And at the same time, you come from a science background Right. also. You have a degree in MBBS Right, sir. from AIMS Jodhpur. Right, sir. And you have taken medical science also as an optional. Right. But if you overall look at the UPSC exam, it is mostly a humanities subject based exam. Yes, sir. How do you think
a scientific mindset actually helps you tackle probably better. सिविल सर्विसेज। अजय पाल सर का टॉप दिस इज व्हाई आई एम इंटरव्यू। इनटू द सिविल सर्विसेज, क्योंकि हमारे सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें उतनी सही नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत शौक है। एंड दिट इज़ वाई आई नो व्हाट इनजस्टिस इज, दैट इज़ वाई आई ट्राई कि मेरी कलम से कभी किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। दिस इज़ वाई आई ट्राई। This is the first incident when I got into the civil services. I thought of preparing for the civil services. I started preparing for it. और उसके बाद में आप जब सिविल सर्विस प्रिपरेशन करते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 1.5 year ड्यूरेशन का ये एग्जाम होता है। नेट पे सर्च किया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दिस इज मदर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, इट इज रिटन। बंदा जो आधे अधूरे मन से तैयारी करते हैं वो तभी भी वापस मुड़ जाते हैं कि रहने दो इसको। देन in the midterm, I changed many optionals. I changed 9 optionals. Very shocking for generally कोई जो तैयारी करता है। I changed 9 optionals. I took statistics, I took chemistry, I took zoology. तो इस तरह से करके लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पंजाबी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, I changed 9 optionals. उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, अब 1 हो गया है। I changed one optional to another, another to another. फिर then I realized कि भाई I have to change one. Last time मैं सोचा ऑप्शनल चेंज करना है। उतनी देर में मेरा हरियाणा का प्रीलिमिनरी क्लियर हो चुका था, मेंस आ चुका था, और उधर से मेरा यूपीएससी का प्री क्लियर हो चुका था, मुझे उसका फॉर्म भरना था। तो हरियाणा के मेंस एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट होने वाला था 10-12 दिन के अंदर, और यूपीएससी का फॉर्म भरना था 15-20 दिन के अंदर। एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। और हरियाणा में तो भर चुके थे, उसको जोलॉजी से अपीयर होना ही होना था। ऑप्शनल चेंज करने के लिए, बिकॉज आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मुझे यूपीएससी करना है स्टेट्स, उसमें आई वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। आई वेंट टू अ गुड टीचर ऑफ दैट सब्जेक्ट। मैं गया वहाँ पे, आई शेयर्ड विद हिम कि सर मुझे ऑप्शनल चेंज करना है, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द ऑप्शनल, और आप मुझे कितनी देर में करा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम आने में 2-2.5 महीने रह गए थे मेंस एग्जाम में। उनके शब्द ये थे दैट यू आर ऑन अ सुसाइडल पाथ। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, आप ले लो, इस बार तो आपका होना नहीं है, वो तो आप इंश्योर कर लीजिए, लेकिन अगली बार आपका मैं गारंटी देता हूँ ये सब्जेक्ट तो मैं निकाल दूंगा। इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग। स्टेट ऑफ शॉक मुझे नहीं पता लगा, वो मेरे घर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे था जो इंस्टीट्यूट था। मुझे पता नहीं लगा, मैं 6-7 किलोमीटर का पैदल चल के घर पे आ गया। आई फॉरगॉट माई बाइक ओवर देयर। इतनी स्ट्रेस थी दिमाग में। आई केम होम, आई शेयर्ड इट विद माई पेरेंट्स। तो एक दो लाइन सिर्फ फादर की ये थी, जब मैंने शेयर किया, उन्होंने ये कहा कि वो टीचर तुम्हें 3 या 4 मिनट के लिए जानता है, और मैं तो ये 23 साल से जानता हूँ, तो ले तो कर लेगा। और मेरा हो गया। I talked to one of the person who had achieved 3rd rank all over India. उनसे भी मैंने बात करी, ये बस लाइक होगा नहीं इस साल, अगली बार तैयारी कर। बट वो शायद फादर की 3 वर्ड्स की एक लाइन थी जो कि हो गया। सिविल सर्विसेज हो गया। एंड तो आई वुड लाइक टू, क्योंकि जो टॉपिक है उसी पे बेस्ड, आई वुड लाइक टू रेट 1 or 2 केसेस। मथुरा में आई वॉज पोस्टेड एज ASP। ASP इज क्वाइट ए यंगर पोस्टिंग। जब हम ज्वाइन करते हैं, पहले वी आर ASP अंडर ट्रेनिंग, देन वी गेट इनटू रेगुलर ASP शिप। आई वॉज ASP। देयर वाज अ केस ऑफ ब्लाइंड गैंग रेप। एक बच्ची थी 14-15 साल की, उसके साथ में 6 लड़कों ने दे रेप्ड हर, एंड दैट वाज कंप्लीटली अननोन। शी डिडंट नो देम, कहाँ से आए, कौन थे। किसी और एरिया में वो हुआ था। आई वॉज कॉल्ड माई SSP, ही कॉल्ड मी अलॉन्ग, क्योंकि माना जाता था कि हाँ भाई लड़के का काम क्राइम पे अच्छा है। आई विजिटेड द क्राइम सीन। मैं यही कहा कि सर क्राइम सीन विजिट करते हैं। आई विजिटेड द क्राइम सीन। तो वो एक मतलब बिल्डिंग सी थी जहाँ पे कोई रह नहीं रहा था, खंडर टाइप की। शी हैड कम देयर विद हर फ्रेंड, और वहीं पे 5-6 लड़के आए जिन्होंने दे कमिटेड दिस इंसिडेंट। क्राइम सीन को हमने देखा, सोचा, 2-3 घंटे लगाए।
तो जनरली अलग तरीके रहते हैं वर्कआउट के, केस को वर्कआउट करने के. There was huge pressure to work out the case because it was all in media. When I visited there, I spent 2 to 3 hours on the crime scene. तो वहाँ पे what came into my mind कि यहाँ पे कोई बाइक नहीं आ सकती है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, क्योंकि उसके लिए रास्ता नहीं है, तो पैदल चल के कोई आया होगा. तो what I suggested was to take out the voter list of that area. And luckily उसके 6 घंटे के अंदर वो केस वर्कआउट हो गया. And we were able to deliver the justice to that female, to the child. Secondly, आज के डेट में बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दिया जाता है